Very good morning to everybody. Welcome to the channel Stock Guru and Care, dedicated channel for बैंक निफ्टी ऑप्शन इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ओके, चैनल में स्वागत है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप टाइम पर आके लाइव स्ट्रीम को देख सकें। चैनल बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है, ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा। ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, और काफ़ी हद तक मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। मैं करने के बाद लाइव शुरू करता हूँ जो भी मैं करता हूँ उसको। इवन आज देखिए आप, मैंने हमेशा 4 लॉट का एक स्टैंडर्ड रूल बनाया अपने लिए भी, तो कुछ खास निकला नहीं आज, बिकॉज मार्केट थोड़ा कसा हुआ है। अगर आप देखिए इस तरह के मूव्स में आपने लॉस नहीं करना, वही बड़ी बात है। तो उस कंटेक्स्ट में मैं ये बात कह रहा हूँ। और अभी मार्केट को शुरू हुए लगभग 5-6 मिनट हुए हैं, तो इनिशियली तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है होते हुए। और चैनल को ध्यान से देखोगे तो आपको जो डेफिनेटली इसमें से काफ़ी चीज़ें सीखने मिल जाएंगी। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरा है बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग में, और मैं स्कैल्प करता हूँ काफ़ी हद तक। ये कुछ इस तरह की स्कैल्पिंग का सिनेरियो रखता हूँ मेरा ओवरऑल। 60 ट्रेड्स में से ये सिनेरियो बना है अभी तक। 4 लॉट में कोई बुरा नहीं है, जस्ट आपको शेयर करने के लिए मैं दिखा देता हूँ हमेशा। तो अब ये देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर। बैंक निफ्टी की रेंज जो है, बैंक निफ्टी वॉज 200 प्लस पॉइंट गैप अप, और अभी वो 35,500 और 36,000 की रेंज में है। तो 35,500 पे हम लोग देख लेते हैं फटाफट। 16 लाख का सपोर्ट है, और 36,000 पे रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, 25 लाख के ऊपर का है। तो इसका मतलब ये कि 36,000 को पार करना ईजी नहीं होगा। अगर हुआ तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी आज। वैसे तो अगर वर्ल्ड मार्केट को देखो थोड़ा फ्लैटिश है, लेकिन बुरा नहीं है आज कल के मुकाबले। जैसे कल सुबह का, और इवन डॉलर ब्रेंट ऑयल का रेट, क्रूड का रेट भी कंट्रोल में दिख रहा है। लेकिन अभी मार्केट जितना ऊपर जानी चाहिए जा नहीं रही। फ्यूचर्स अब देख लीजिए, ये फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न में स्टॉकेस्टिक आरएसआई के साथ है। यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट थकावट दिख रही है, बिकॉज एच डी एफ सी इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, और थोड़े से थके हुए लग रहे हैं। स्टॉक्स धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट सीधा 35,800 की कॉल और 36,000 की पुट, ये दो मैंने लगाए थे, जिसमें अभी ऐसा लग रहा है कि वापस पुट का पलड़ा भारी। आप देखिए एटीपी वैल्यू से आप नोट करिए, और उसमें आप बेट कर सकते हैं। तो ये 485 हो गया अभी 38,000 का पुट, वेर इन ये 416 और इसकी एटीपी है 458। तो ये एटीपी से नीचे, एटीपी के ऊपर क्या कर सकते हैं, कुछ किया जा सकता है अभी फिलहाल। इतना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट डेफिनेटली वीकनेस तो है बैंक निफ्टी के। अपने डे लो है 5756, तो या तो ये अपने डे लो को फिर से अभी तोड़ देता है, तो फिर तो आप पुट का ट्रेड ले लो, नहीं तो बैठे रहो। ज़्यादा गिरेगा नहीं, 35,800 भी एक सपोर्ट ही है। एक बार वापस ध्यान से देख लेते हैं ऑप्शन चेन को। ऐसे ही आपको करना है जो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉपी करो जो मैं कर रहा हूँ, वही आपको वो धीरे धीरे करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको स्ट्रीम होते होते आप तक पहुँचते हुए 15-20 सेकंड भी लग सकते हैं। 35,800 पे एक सपोर्ट है, जिसकी वजह से इसे समय लग रहा है उससे नीचे गिरने में, इसलिए हम 35,840 पे इसमें है, और फ्यूचर में हम है 902 पे। या तो फ्यूचर में हम लोग 36,000 पार हो जाए तो भी एक आइडिया लग जाएगा। तीसरा आपका कैंडल 15 मिनट का, जो 10 मिनट के बाद का तीसरा कैंडल होता है, वो थोड़ा ग्रीन में दिख रहा है बनते हुए फ्यूचर में। या फिर कोई क्लियर कट हिंट नहीं है। देखो कितना टशल चल रहा है, दोनों सेम प्राइस प्रीमियम। सो टफ थे इनिशियली, कोई वन वे साइड दिख नहीं रही सिनेरियो। इनफैक्ट कल तो 12 बजे के बाद बहुत भयानक उछाल, काफ़ी सब कुछ बदल गया था। जबकि इस तरह का ट्रेंड आपको पैसे कमा के देता है, इस तरह के ट्रेंड में आपका हमेशा स्टॉप लॉस कटेगा ही। तो ये आप ध्यान में रखो बातें। चैनल विद डिफरेंस स्टॉक गुरु एनकेएस टाइप करोगे चैनल आ जाएगा। ये देखिए नियो स्टॉक में बहुत बढ़िया था सिमुलेटर इंटरफेस, बोल लीजिए जो बोलिए, एक लाइव सिनेरियो में आपको ट्रेडिंग करने का विदाउट मनी सपोर्टिंग योर मनी। तो ये बहुत बढ़िया सी चीज़ है, ये आपको कभी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे तय नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा हमें किस तरफ जाना है, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पर आप। तो राइट नाउ तो इट इज़ वेरी नेक टू नेक। इसके दो ही तीन सिनेरियो, या तो अपना डे लो फिर से तोड़े तो आप पुट का ट्रेड लोगे, और अगर फ्यूचर जो है डे हाई जो फ्यूचर का कितना है एक बार देख लेते हैं। 36,000 तक गया था ये, इसका मतलब ये 36,000 तक गया था, 36,070 तक गया था। अगर ये टूट जाता है फ्यूचर से, आपको आइडिया लग जाएगा कि
आपका स्पॉट की बैंक निफ्टी की क्या सिनेरियो है? तो वापस ये थोड़ा सा ऊपर आता हुआ, ये देखिए चार्ट्स आपने 1 मिनट की कैंडल स्टिक में नीचे स्टॉकेस्टिक आ रहा था कि बाई सेल सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश करनी है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी उछाल हुई है अभी, इसकी 445 455 इसकी एटीपी है, 466 चला गया है ये। तो बहुत ध्यान दो फ्यूचर को, बैंक निफ्टी फ्यूचर को 35,964 पर है, स्पॉट 894 पे है, तो ठीक ठाक प्रीमियम पर है ये। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई फुल ऑन एक जोरदार पुश जो है वो अगर एक बार आ जाता है, क्योंकि इसका डे हाई जो बना है इस वाले का 531 है और लो है 400 इसका, 35,800 की कॉल का। और इसकी वॉल्यूम है लगभग 22 लाख के आसपास, 22.5 लाख। और इसकी वॉल्यूम भी देख लेते हैं फटाफट एक बार, 26 लाख वॉल्यूम इसकी ज़्यादा है पुट की कंपेरेटिवली। और इसका हाई था 500, लो था 350, 500 350, इसका हाई है 531 और लो है 400। तो इस वक्त भी कहना बड़ा मुश्किल है। अटका आया है, थोड़ा सा अटक रहा है मार्केट तो। और वैसे भी सेक्टर्स का एक बार देख लेते हैं फटाफट। खास अपसाइड नहीं है, बैंक अप है आज नो डाउट। ऑटो बहुत ऊपर 0.9 पे है, कल के मुकाबले ठीक दिख रहा है सुबह का डेटा। मेटल डाउन है आज, मीडिया मेटल दोनों डाउन, फार्मा और आईटी भी अप है। और मिक्स बैग, रियल एस्टेट ऊपर है। तो कैश में एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, एशियन पेंट ऊपर हैं। और एफएनओ सेगमेंट में आईबुल, नालमिया, भारत, जेके सीमेंट ऊपर है। तो कोई ऐसा कुछ, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस एक बड़ा दिख रहा है मूव ऊपर की तरफ, बट बाकी कुछ खास नहीं। वेट एंड वॉच वाली मार्केट लग रही है फिलहाल तो। जस्ट नाम नेम से एक प्रॉफिट का कुछ खास हुआ नहीं, नहीं तो ये तो 2,500-3,000 पे नहीं जब तक हो तो फायदा नहीं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। $36,000 क्रिटिकल है। और बैंक निफ्टी में एक्चुअली कोई भी बैंक अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दो, बाकी सब बॉर्डर लाइन चल रहे हैं। एसबीआई कर सकता है कमाल, अगर 500 पार हुआ तो एसबीआई भी कमाल कर सकता है। एचडीएफसी ऑलवेज थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट देता है। देखिए 15 मिनट होने के बाद जो 20वें मिनट की 5 मिनट की जो कैंडल बन रही है वो ऊपर की तरफ बन रही है, तो ये एक कोशिश तो हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं या तो वॉल्यूम की कमी है। ये देखिए वॉल्यूम ड्राई डाउन हो गई है, पहले कैंडल की वॉल्यूम 5 मिनट के ज़्यादा थे, उसके बाद के ये वॉल्यूम के कैंडल पे ध्यान दो, वॉल्यूम इतनी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं फ्लैटिश वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है। अब इसकी वजह क्या है पता नहीं। उतना अच्छा नहीं लग रहा अभी तक। जब भी पुट और कॉल सेम प्राइस पे चल रहे हों तो आप समझ लो कि कोई डिसीजन या डायरेक्शन तय ही नहीं है। अब देखो दोनों सेम ही है, ये 426 या 444, ये 36,000 का पुट है। इसमें आप देखिए 29,35,000, ये देखिए यहाँ पे 29,97,98, 30 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम हो चुका है। और यहाँ पे वॉल्यूम देख लेते हैं क्या है, यहाँ 25 लाख। तो वॉल्यूम वाइज तो पुट की तरफ पलड़ा भारी दिख रहा है। टीपीक्यू टीएसक्यू टोटल बाई क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी है। ये ओपन कितने पे हुआ, हाई लो, एटीपी एवरेज ट्रेडिंग प्राइस हो जाता है, एक्सपायरी कब है ये आ जाता है। हम्म, और ये अभी चल रहा है 29 तारीख को बता रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है 84,795 का, यहाँ पर है ओ आई। और इसका भी ओ आई देख लो, देखो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पता लग जाती है। ओ आई बिल्डअप भी तगड़ा हो रहा है, मुझे ऐसा पता नहीं लग रहा है जैसे कि
मार्केट बहुत कसी हुई है। इसकी एटीपी 426 और ये चल रहा है आपका 440 पर। कहीं ना कहीं ऊपर जाने में प्रॉब्लम आ रही है मार्केट को, ये देखिए कैंडल भी वही बताते हुए। लेकिन अभी भी कोई एक फर्म डिसीजन मेकिंग हो नहीं पा रही है। 431 433 कसा हुआ मार्केट है। मैं वापस आपको बता देता हूँ, ये आप देख लीजिए बैंक निफ्टी का फ्लैट चार्ट है। ये सुबह के 15 मिनट में कुछ भी अपॉर्चुनिटी इसने दी नहीं है। या तो ये अपना डे लो, डे हाई तोड़े, या डे लो तोड़े। उससे बिना कोई भी ट्रेड बन नहीं रहा है इस वक्त। इन दोनों में से कुछ नहीं होता है तो कोई भी ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखता है हाल फिलहाल। ना तो ये ओपन इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं, यहाँ बड़ा जरूरी है आपको ध्यान देना। 35,500, 17.5, 36,000, 29.2, इन दो पे ध्यान रखना। क्या ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये आपको काफ़ी हद तक आइडिया दे देंगे। ओके, विच डायरेक्शन द मार्केट इज गोइंग। हर दिन इजी नहीं होता, लेकिन पूरे दिन में धीरे धीरे ही सही, चाहे बाद में मौके आने शुरू हो जाते हैं। मुझे लग रहा है आज इंडेक्स से ज़्यादा कैश स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है, बट वहाँ पर भी कोई खास चीज़ दिख नहीं रही मुझे अनफॉर्चुनेटली। फिलहाल जो मैं देखता रहता हूँ रोज मार्केट, उसके बेस पे कह रहा हूँ। चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चैनल अभी नया है, बहुत ज़्यादा नया है, इसको अभी भी बहुत समय लगेगा एक एस्टेब्लिश लाइव स्ट्रीमर चैनल होने में। कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है आप पूछ सकते हो तो पूछ लीजिए। स्टिल नो एक्शन हैपनिंग। काफ़ी फ्लैट सिनेरियो एक बार देख लेता हूँ मैं वापस। 421 442 देखिए, डाइसी सिनेरियो। इसमें कोई भी पोजीशन लेना बड़ा डेंजरस होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा उसमें। जिस तरह के फास्ट इन एंड आउट हमें ट्रेड में करने हैं, जो स्कैल्प करने हैं, स्कैल्प के लिए कंड्यूसिव नहीं है मार्केट। बेटर टू स्टे अवे, हैव द पेशेंस ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग इज आल्सो डूइंग समथिंग समटाइम्स। जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने लंबे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, इस समय का जो भी सिनेरियो दिखता है थोड़ा सा टाइट सिनेरियो है। एक ही जगह मार्केट घूमती हुई आप यहाँ पे देखिए, has to give a direction something like this or this. Okay, without that it's too tough to trade. देखिए, जो इस तरह के ऐसे फ्लैटिश सिनेरियोज होते हैं, इसमें humanly impossible to get money, to make money, sorry, not get money. So 1 minute chart is a very good indication of what is happening. वापस फोकस करें, any specific movement from bank? Well, ICICI Bank is the bank, and if there is any other bank which can support its cause of moving up, is SBI Kotak. HDFC बैंक वापस थोड़ा फ्लैटिश है, बट इट कैन पार्टिसिपेट इन द रैली। 5 मिनट की सिग्नलिंग अभी इस तरह से बन रही है फ्यूचर की, तो ऐसा लग रहा है कि एक अपसाइड के चांस हो सकते हैं। तो उस लिहाज से, उस हिसाब से आपको ATP 451 यानी आपको कॉल की तरफ ही फोकस रखना पड़ेगा। तो आप कॉल का इस तरह से चार्ट लगाएंगे 1 मिनट का, नीचे स्टॉकिस्टिक का ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक छोटी सी मूव्स आने लग गई है। यहाँ पे इसकी ATP वैल्यू है 451। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन 36,000 अगर फ्यूचर का पार हुआ तो आपका जो ट्रेड है वो 35,800 की कॉल ही एक लॉजिकल ट्रेड मुझे लग रहा है। अदरवाइज
देखिए धीरे धीरे डिप हो रही है ऊपर की तरफ। 35,800 पे फोकस रखिए अपना। 35,800 is a call, my friend. I think the time has come to take participation in this because देखिए इसकी एटीपी भी 451 हो चुकी है और इसकी एटीपी से ये नीचे जा चुका है पुट का ट्रेड। आप ध्यान दीजिए, आप बड़ा ये वही हाईली फोकस्ड। तो इसको बाई कब करना है वही एक चीज थोड़ी सी ये कर रही है कंफ्यूज। बिकॉज ये भी फ्री फ्लो से ऊपर नहीं जा रहा है बट कंपेयर टू द पुट कॉल साइड में वॉल्यूम्स बढ़ रही, कॉल साइड में मूवमेंट ज़्यादा है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस वैल्यू से कॉल का ट्रेड ज़्यादा जा रहा है। बट द रिकन्फर्मेशन विल हैपन वंस ये क्रॉस हो जाए। ये कितना गया था हाई अपना 3670 फ्यूचर, और ये गया था 35,977। तो अपने वहाँ से 100 पॉइंट नीचे डे हाई से अभी तक स्पॉट में। ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 20 मिनट के बाद की जो पहली 5 मिनट वाली कैंडल है वो बड़ा तगड़ा सिग्नल दे रही है। ये बाई सिग्नल होता है जब ये ब्लू वॉल्यूम और ब्लू लाइन ऊपर की तरफ डायरेक्शन करे अलॉन्ग विद वॉल्यूम बार और ग्रीन कैंडल ऊपर बने। तो देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स गोइंग इन द अपसाइड। तो कुछ वैसा होता हुआ। तो 457 हो गया, देखते ही देखते 458 459। अब इस ट्रेड का जो है एटीपी प्राइस इज 451। एटीपी से कम उसको 15-20 पॉइंट अगर ऊपर रहे तो आप एक चांस ट्रेड मार सकते हो इसमें। देखिए ये भी 900 के पार हो चुका है स्पॉट। लग तो रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, बेशक उसने समय लिया है बट लेट अस सी कहीं ये फॉल्स प्राइस ना हो जाए, वही डर है। प्रॉब्लम वही हो रहा है। 100% कन्विक्शन आ नहीं रही है फिलहाल। वो 68 हो गया बातें करते करते। 471 श्योरली ट्रेड की अपसाइड बन रही है। ये देखिए 36,000 की तरफ जाता हुआ 483। कल एटीपी से काफ़ी ऊपर चला गया ये। मैंने वो कोशिश करता हूँ आपके सामने ही पोजीशनिंग करने की। लेट मी सी इफ आई विल able to do that because I get a little defocused क्योंकि लाइव ट्रेड में एरर्स भी हो जाते हैं जब आप स्ट्रीम भी कर रहे हो। तो कैसे डालते हैं देखिए, आप पहले क्वांटिटी डालेंगे नॉर्मल या एमआईएस में जो डालेंगे उसी में आपको सेलिंग भी करनी है, याद रखना। लिमिट में आपको जिस प्राइस में एंट्री चाहिए वो यहाँ लिखेंगे और अगर मार्केट प्राइस की चाहिए तो मार्केट लिखेंगे। दैट्स इट। वो करके आप बाई का बटन दबाएंगे तो ट्रेड बाई हो जाएगा। मैं अभी भी इतना श्योर नहीं फील कर रहा हूँ इसमें बिकॉज ये 35,976 जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे से क्रॉस हो तो ठीक है। ये 30 लैक्स हो गया, ये 30 लैक्स हो गया, 29 था। यहाँ बिल्डअप भी हो रहा है तो थोड़ा सा आगे का देखिए आप। आगे बहुत इसको रुकावटें हैं, 8 लाख 9 लाख 6 लाख। तो ये आगे इसकी जो ऊपर जाने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो एक लिमिटेड सी कैपेसिटी लग रही है। या तो शॉर्ट कवरिंग हो, इसलिए आपको बहुत जल्दबाजी। देखिए अब ये ट्रेड अगर लिया होता मान लो आपने यहाँ पर, तो आप गए, आप फंस गए थे। आपका स्टॉप लॉस पक्का 20 पॉइंट का आपका यहाँ पे जाता, 2,000 रुपये आपके निकल जाते बाहर। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये चक्कर है सारा आज का। तो आज वैसा दिन नहीं है कि बड़ी आसानी से सब कुछ हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। और देखिए ये कुछ इस तरह से सिनेरियो है, ये बड़ा मुश्किल है ये। स्पेशली ऑप्शंस में यहाँ टाइम वैल्यू का फैक्टर भी आ जाता है। इट्स नॉट दैट इजी टू मेक मनी बिकॉज द मोमेंट इन विच स्पॉट विल राइज और फ्यूचर विल राइज, ऑप्शन उतना तेजी से बढ़ेगा नहीं, ये याद रखना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना है, तभी आपको पता लगेगा कब कब स्ट्रीम हो रहा है। तो चैनल थोड़ा अलग है, बाकी चैनल भी होंगे बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि चैनल इज इंफॉर्मेटिव। you'll get to know, you learn quite few things. That's all I can say right now.
because there's no we need to be focused on how to identify the things. So right now still it's not much upside seen in the bank Nifty because day high Tutani and day low is also intact. So it's like a mixed bag of a initial half an hour. तो देखिए अगर आपने यहाँ एंट्री ली होती यू वुड हैव गॉट स्टक इन दिस बिकॉज आपका एस एल आपने तो 450 के आसपास ही लगाया होता है ना यू वुड हैव gone down by 2000 rupees because I am assuming the four lot is the buying which is really required to make any kind of a money. Substantial money, if not substantial, but some sort of a money, 1000 plus. So it's a struggling market. Can you could very well see यहाँ पे बहुत struggle हो रहा है इसको up down up down. There's no set no direction as such. ये देखिए two red candles, then one green, then again red, then green, again red. So there's no clarity. Even though all the banks which contribute to the weightage of Bank Nifty index are green, but they are not very high on upside नहीं है उसमें. Most of the important banks, barring SBI, are not even above 0.5%. Only Kotak is there right now, but clarity नहीं है. But कौन से ट्रेड पे ज़्यादा बेट किया जा सकता है इस समय वो भी कहना थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है बिकॉज अगर हम पुट की तरफ आए तो वहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो ही दिख रहा है बट पुट पे 41 lakhs 42 lakhs का वॉल्यूम है दैट इज द फर्स्ट थिंग और कॉल के ट्रेड पे देर इज 38 lakhs का वॉल्यूम तो 2 लाख का वॉल्यूम डिफरेंस इज देयर एविडेंटल other thing is that the average traded price value of put is 421 and it is at 426 and this one's ATP is 452 and it is at 427 so it is so tough now it is looking like put trade is going to move up look at it so how will you know if 1 minute chart pattern along with probability RSI to get an idea so still uh, keep 35,800 call and 36,000 put on your screens and observe them दोनों को observe करना पड़ेगा because either one of them should break its high then it will be more confirmation if put ka high is 500 and call ka high is more than 500 I think 531 and this is the 1 minute of spot and this is the 5 minutes of future with this kind of setup you will always keep on your trading access red हो गया है Bandhan Bank doesn't have much weightage so important to watch is this for first five Axis, HDFC, ICICI, Kotak and SBI. Tough day, looks very tough day to do anything. Comment section is off. So still nothing happening. Secondly, you can write comments on my live stream. मेरा comment section is not turned off. I think it's on. If anybody is watching, you can write. आप अगर देख रहे हो stream को, I don't think it's off.
just go to the stream and live chat option and type something. You can type anything. I mean, which is obviously related to market. Just try typing something. Okay, back to the market. कुछ हो नहीं रहा है. Both put and call trading at same price. 36,000 put and 35,800 call. See the screens. Both of them. Still no upside, but looks like put is holding up. Put side is 422 and it is 439. So it is above its ATP by roughly 20 points. Same thing which happened with the call trade also. Hello Anand. So I think Anand, you were trying to message me. Okay. Yes, Anand, you can write if you wish to ask anything. So no direction in the market right now. Market में कोई direction नहीं है and this is the chart structure which is giving no hint whatsoever. Only thing is open interest building up on the call side, which means it will be tough for then Nifty to cross 36,000. Either a short covering has to be done by somebody. And on the downside, there is a support at 35,500 area, and we are at 35,820. So you can see that only two greens, four reds. So this is another confirmation that market ऊपर जाने में it's finding very tough for itself. Okay, although banks look green 5 of them, but the volume is also very low. ये volume है, this is volume. So what I can make out from today's morning 35 plus minutes is that there is a lack of volume which is not pushing the market in certain direction. So volume की कमी है. Now still now it looks like put trade is pushing up little more. तो हमको फटाफट we need to now very fast see what was the day low. 35756. We are at 792. So we are near the day low, and in future there is the day low is 35,800. So अगर day low टूटता है, if day low breaks, then we'll have no choice but to go for the put trade. Okay, so put trade ATP is 424 and call trades ATP is 449. So it is clearly a put trade which is having an advantage right now. So do observe the channel very carefully. Channel will make you learn at least a lot of things free of cost. Subscribe it, press the bell icon to get the timely notification of any live stream, because non-stop 6-hour live stream is not possible, at least for me. First hour and last hour are most important in the market. That needs to be capitalized. उसको हमने capitalize करना है. So the objective is that. Okay. So even we can see whenever it is trying to fall below 35,800, it is trying to bounce back. So 35,800 is holding. So this is how you come to an idea whether the support is getting maintained or not. Another important thing is from yesterday, the market is high and it's remaining its upside from yesterday's areas. Okay. So it is literally trying to be towards the 24th of March. It's
somewhere near that, but it is not able to move more up. So there is a little pressure and lack of volume. Volume की कमी है. Still no idea on which direction the market should go. It's in the range. So let us take the sectors. To bank is okay, but auto is up, and pharma is 1% up. So something is happening in pharma. So the biggest plus is pharma today. And let us try and take these lab. And among the top gainers in cash, SBI Life, HDFC, and in FNO, I will. Losers, it is Indus Tower, PBR is a loser. In cash, it is Coal India and ONGC. So, very flat market. Still, this is the scenario of almost 45 minutes. Nothing is happening. Only thing is that market is trying to hold itself, but majority of reds are signaling that there is a weakness and there is a lack of volume in Bank Nifty. Market not giving any opportunity till 10 o'clock right now. Only thing is wait and watch, and if first hour is not giving an opportunity, then it is a very tough day. तो अभी हम देख रहे हैं विल अभी भी इंग्लिश एंड हिंदी साइमल्टेनियसली. तो ट्रेड अभी कोई बन नहीं रहा है, और अगर कोई बनने की ट्रेड कोशिश हो रही है तो वो है 36,000 का पुट. उसका वॉल्यूम 51 लाख है. ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आ जाता है, और इसका वॉल्यूम देख लेते हैं कॉल का, तो 46 लाख है. तो काफ़ी मुश्किल होता है इसमें to get a sense on which side the market will be. So it can be on any side. Right now, Anand, the thing is that market is really not giving any direction, so it will be very difficult to give any call or put trade. Although I am a scalper, I just go in and out. The initial few minutes of market opening, and I also struggled in the morning, though I didn't make any loss. It's not unless the day high is broken or the day low is broken, we should avoid taking any call or put. Okay, you need to keep an eye on the market. Keep 35,800 CE and 36,000 put both on your screens. That's the only thing you can do, and keep an observation. No trade right now. No trading zone. Either the future should cross 36,000 day high, even the spot should cross its day high, then we can go for a call trade. Otherwise, they should fall below their day lows. Till then, no trade, no trade. Only observation. So 1 second.
देखिए वापस keep an eye on this 36,000 put right now. Okay. So the SBI down, SBI suddenly fallen, so it looks like a sudden fall is happening in the market. Yes, you can see a very sharp fall has occurred. You may try. देखिए डे लो के पास आया है मार्केट, सो कीप एन आई ऑन 36,000 पुट वेरी फास्ट. Excuse me. The put trade is picking up now. 36,000 put, keep an eye instead of 35,800 call, because put has taken a deep. Put का trade पे keep an eye, keep an eye. Well. Looks like a fall in the market. Looks like a fall in the market. So I am also keeping an eye on 36,000 put. Will it peak? Need to be seen. Day low क्या था? 54. So it is weakening. Well, we got to be in this one now. We got to be in this one now. Looks like a fall because day low is broken. So 36,000 put. The only thing is, will it maintain itself? Because it's already broken its day high. So I've taken a position in this one. Let me see. I got it at 490. Oh. Now this is what happens sometimes. You need to immediately keep a sell the way I'm doing. So now my positioning was at 499 and it is at 481. So well, this is how I do it. It's at 484 now. Without SL never trade, please keep this in mind. जो भी मैं बोल रहा हूँ, whatever I'm saying, it will be reaching you a little late by another 15 seconds to you. It will take to reach you as a message because of the streaming. Oh my god. So my SL has got triggered, so no point in staying in now because I lost around 2000. So this is what I say, because it's very tough when the day is tough. You need not be venturing much into it. So I have to may stay out of this one now. I can't take any further chance or participation because this is clearly what happened is, look at this. So it was an indication of fall, and from there on sudden upside. So clueless market. Very risky. I do trades in multiple lots, so be prepared for losses also. So I was in little up. I was around 700 up and now I'm 2000 down. Purely because when I took the entry, when he said it started falling, you see. I'll just show you my order. So I got that entry at a very high rate. Actually, it was 490. I thought I got it at 490. I got it at 499. The reason was that I thought कि breakout has happened and it's going to surely move upside. But देखिए वहीं से it reversed. So this is what happens. But still among the two trades, it is the put one which will do wonders. But only thing is you'll have to keep a very deep stop loss and you'll have to convince yourself on this.
Now you can see it is moving up again. But I since I make a selective amount of money for the day, so I try now avoid myself to do too much of venturing. Surely market has weakened without a doubt. Look, it's 489. My entry still was at 499. So again trying to fall, but again 33 lakhs is the OI now. So open interest buildup is happening, but market is neither going to fall too much nor going to rise. So it's not a great day so far for me. I ended up losing only, unfortunately. Mm. So this is the scenario. So here it was looking like कि यहाँ पे से ये it will fall pretty steeply, but again it somehow I don't know why it managed itself, and that is how you lose money. So you can see this is the area which I tried, considering that it was breaking its morning's high, but from there on it fell. This is what happens in a day trading scenario. You need to be very careful, but all said and done market is today very sideways. आज market ऐसा नहीं है that you will be able to make money easily because nothing is happening. The opportunity was there for 36,000 put, but it went so fast. It was somewhere here. 441 say it went to 500, so did give an opportunity, but then अब देखिए you can see now how fast it is falling. The put is fallen back very badly. So very tough day, very tough day. So it's a, we can't say which direction the market will go today. It is stuck in the same narrow range since morning between 36,000 to 35,730. So it's a like roughly 200 points, 300 points rather. Give me a second. Keep an eye on the screen.
I'm back. और well, again the same thing. कुछ नहीं हुआ मार्केट में. I tried one trade live in front of you and I lost my money. So no complaints because it's my own call. So why should I tell anybody for that? So let us see what I did. So this is like 3 attempts I had made. So per attempt you will lose around 170, 180 brokerage plus taxes also. Don't forget that. So this was the attempted trade, but it did not work the way I wanted it to. So still scenario is same now. But आपको अगर कोई ट्रेड में वेंचर करना है तो अभी भी आई एम स्टिक to the fact that it has to be the put trade, which is keep calm right option. I am also live. How are you doing today? Not fine. I lost money. So writing option requires a lot of money. I don't have that much money. What's your name? Keep calm right options. So looks like a weak market. मेरे को तो weak लग रहा है market. Because had it been a green market, we would have crossed 36,000 by now. We were already 1 hour in the market roughly, and still no clue on which direction the market is going to remain steady. Whatever number of tries you have to do, आपको वो first hour में अगर you are not able to make out anything from the market which is substantial, so you should not keep on trying again and again. That's one thing जो मैं हर एक को बोलता हूँ, या I'll keep saying this again and again. You cannot keep trying trade after trade after trade, because every trade you are going to lose the thing substantial money. No, it's not question of being judgmental. No judgments on writers or buyers. Any, you're not. Please understand the fact that how many of the public would be having good enough money or 1 lakh plus to, write things. You know, so it's like I avoid and I have not ventured much into writing. Yeah, Shri. Yeah. Thing is, brother, it's not question of pinpointing or something. It's like you got enough money, so maybe it suits you. Like if you even if you are good enough by 60-65% hit rate, you will make money even by buying a put or a call. No, I know it's a naked call or put buying, so it may, but you got to be very clear on what kind of a losses you can observe. Bus, that's the only thing. Stochastic RSI, one of the best buying selling indicator. It really helps for a scalper to venture into any kind of a trade with a 1 minute candlestick pattern. Simple. Still 458 flattish kind of a structure. Looks like shorters will enjoy the day because it's too tough for market to breach 36,000 now. 34, 8, 43, 11. So heavy buildup of shorters on the call side, which means Bank Nifty ko it will be very tough. Only a short covering can save the Bank Nifty today. Otherwise, looks like a shorter's day, I have to admit. The call writer will be dancing right now. But any case, if some short covering happens, if at all, then it will be a different story. Low here is
730, we are at 786. The future is at 845, 7. So there is still 100 points premium in future if you see carefully. फ्यूचर जो है 100 पॉइंट के प्रीमियम पर अभी भी चल रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. Still future is on premium, but there is a lack of volume, you see. Look at the volume. So there is a lack of volume. So low volumes will not give any upside or downside very fast. That is my reading for the day. And overall, if you see SBI niche has come down, even ICICI, so market is definitely weakening up, but HDFC is now coming into picture and trying to hold the market. Hmm. Yes, absolutely right, Shri. Waiting for 1 hour to finish the range. A really narrow. It is a narrow range. There is no significant upside downside visible, but considering the movement of banks, it looks more weakish kind of a setup. The support is at 35,500 area, and then you have another support at 35,700 along with 35,800 ounce, and we are at 773. So still I think 36,000 put is still a worthy trade. Yani ki market looks to be more weak relatively. It will all depend whether this day low of the 35,800 call gets broke. If that is broken, then 100% confirmation. Still 36,000 put trading above the ATP value compared to the call trade of 35,800, which is below the ATP value. So indications are much more better for a put trade. Again, I will say, so nearing 1 hour, we have already 1 hour post opening. And on my stream, if I can see, it's nearing 1 hour in my stream also. Another 8 minutes to go because I do not stream live for continuous 6 hours. I do take certain break time in this. I unnecessarily ventured into this. Well, anyway, that's part and parcel. So one thing is there, if you're managing 65% plus ratio of whatever you trade, there is every possibility of you earning, subjective to what kind of a risk to reward ratio you are maintaining consistently. So end of the day, it boils down to that. So whatever देख लेते हैं, if there is any life in stocks right now, nothing great happening. FNO, we got cement stocks moving up. All cement stocks are up. Most of the cement stocks are up. Ambuja, JK Cement, India Cement, Dalmia Bharat, so ACC. So exclusively cement sector moving up. Well, on the downside, very strange PVR going down, wherein the movies which are lined up and the RRR is breaking all sort of records. Uh, Maybe profit booking or something. ONGC down obviously because the crude is down and around 108 right now as far as, and the world markets are little flat. So tricky day, not an ideal day for a fast scalping or a good upside downside move. But still this should suit people who are writing today. Call writers looks to be in advantage big time. OI still maintained on 842, 11, 53 and 765. So 80 lakhs open interest is builded up around 36,500. Well, who's going to do that short covering thing? Any triggering will only happen on the basis of news. So if you go by this chart of spot, it looks as if we are trying to contain at some area. 35,750 is being maintained, contained. So neither the
steep fall is happening nor the upside is happening. So something is surely going to happen. Do like the channel, subscribe it along with the bell icon to get timely notification of the streams. Channel is different from other channels. You can do the live practicing on this interface of neostocks.com, which is a simulator which is directly linked with the live market. So here you can do a lot of practice with virtual money. Neostocks.com, use it to increase your efficiency. तो जैसे आप देख रहे हो, हम लोग 1 घंटा मार्केट खुल चुकी है, किसी किस्म की कोई डायरेक्शन का इंडिकेशन नहीं आया है, वेरी स्लगिश डे, और इसमें स्टॉप लॉस तो वन ट्रेड आए अदानी पोर्ट, इज इट, देख लेते हैं इसको, समथिंग इज हैपनिंग इन अदानी पोर्ट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ट्रेड्स. Well, on a day basis chart, well, looks like a breakout trade Adani Port. We will see the option chain of Adani Port का option chain देखेंगे हम लोग. It is trading at 757 in future. तो फ्यूचर 76 क्रॉस कर चुका है. अब अप्रैल मंथ, maybe we should see the April. Adani Port has a possibility of reaching 800 also. Adani Port का जो फ्यूचर है, that has a quality and it could do wonders. So Adani Port, keep an eye. In stocks or futures, it has to be Adani Port, which should be seen as a good trade to venture into. अदानी पोर्ट में आप वेंचरिंग कर सकते हो, उसका डेटा कुछ वैसा ही बता रहा है. लुक्स लाइक अदानी पोर्ट कैन डू समथिंग. और अदानी पोर्ट का आज का जो है चार्ट स्ट्रक्चर भी देख लेते एक बार ऑन ए 1 मिनट बेसिस. Well, after half an hour it is moved like anything. From it opened at 740s and now it is at 760 already. It is consolidating around 760. So Adani Port is the trade in terms of stocks. Otherwise, Bank Nifty very flattish, very tough to decide which way it will go. So if a short covering occurs, तो 35,800 का कॉल भी चल सकता है, बिकॉज वो पूरी तरह से अभी तक गिरा नहीं है. ये भी हमें सोचना चाहिए. बट सो फार लाइक yesterday अगर शॉर्ट कवरिंग आ गया तो एनीथिंग इज पॉसिबल. फ्लैगिश फ्लैग पोल पैटर्न तो बना है 36,000 के पुट में. क्रॉसेस द डे हाई, it will blast. If it crosses 500 plus again, it will blast. It can go to any high. Its high made is 510. तो अगर ये अपना डे का हाई तोड़ता है
it has a possibility of moving very upside, और उसके लिए बैंक निफ्टी हैज़ टू गो बिलो 35,700. समथिंग हियर 784 है अभी, तो आप देख सकते हो ये सिनेरियो बन रहा है. इसका अगर ये लेवल टूटता है तो इट विल श्योरली टच 35,500 बैंक निफ्टी, और 36,000 पुट देन बिकम्स एन आइडियल ट्रेड. तो अभी देर इज अनदर पॉसिबिलिटी विच कैन बी ट्राइड little more in the money put trade which should be 36,200 put. एक बार उसकी तरफ भी देख लो. इसका ATP is 550 एंड इसका चार्ट स्ट्रक्चरिंग क्या कह रहा है वो भी देख लो, बिकॉज once you see 36,200 put is at 600 right now. So if Bank Nifty moves more below 36, 35, 600 areas, so this trade will really rock. So this can also do wonders. 36,200 put. Keep an eye. 36,200 put deep in the money, but अगर मार्केट गिरता है तो 36,200 का पुट जो है वो बहुत अच्छी अपसाइड दे सकता है. क्या इसमें ट्राई किया जाना चाहिए? सो आई एम लुकिंग एट इट, आई एम गेटिंग टेम्प्टेड. Problem is stop losses. They trigger very fast when you are not able to gain out of the first hour trading where there is maximum volume, then it becomes very tough for this strategy to work. देखिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी चलेगी जब वॉल्यूम के साथ आपने किसी चीज़ में एंट्री की और वो आपकी डायरेक्शन में हुआ है. द मोमेंट days moves on, volumes are going down, down, down and more down. कम वॉल्यूम में the trade can hamper you big time. You can see this was 609, it is 587. So your stop loss management will suffer very badly in this, because if you are taking 4 lots or 100 quantities, even a 20-point downside will give you 2000 loss. It's very tough to maintain yourself. Either you don't trade for first hour and then you venture into it, then it's a different story. अगर आपने सुबह से ही 2-3 ट्राई की हुई हैं and it's not worked, तो the more and more you try, the deeper you will go into losses. So I think I'll have to wind it up. It's a 1 hour stream done, and please support this channel by subscribing and pressing the bell icon so that you get timely notification of all kind of streams, because market may give a certain direction later part of the day. So I will come back with the live stream again. So till then, uh, keep supporting the channel and be in touch. Bye bye.